can't breathe without your love. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ऐश्वर्या। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिंपल रक्षाबंधन मेकअप ट्यूटोरियल। इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखें। ओके, सो मैंने ऑलरेडी आईब्रोज और मेरा स्किन एंड लिप प्रेप मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है बिकॉज आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी लाइक सुपर लॉन्ग एंड आई इवन गॉट पिंपल्स ऑन माई फेस बिकॉज मैं जिम जाने लगी हूँ। बिकॉज ऑफ दैट बॉडी हीट बाहर आ रहा है विच हैज़ कम अप ऑन माई फेस, बट एनी वेज वी गोना कवर दैट। और कवर करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये पहली दफ़ा होने वाला है, आई एम गोना यूज दिस, सो या लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड सी मैंने मेहंदी लगवाया है। How it looks? Comment below how it looks. Okay. I like that. Anyways, let me open this thing. Okay, so ये है Primer. This looks really classy. It has golden flecks in it. Okay. So I'm gonna take थोड़ा सा मैं लूँगी अपने हाथ के ऊपर. rub it. थोड़ा ये warm up हो जाएगा. So I'm massaging it in my fingertips. I'm gonna apply it more on my problematic areas like my pimples And my acne scars. This is really soft and it smells amazing. इसे मैं अपने स्किन के ऊपर 5 मिनट तक रहने देने वाली हूँ so that it sits on my skin. So yeah, after 5 minutes मैं फाउंडेशन लगाऊंगी and तब तक wait. I wanted to show something. मैंने ये स्पंज लिया था. This is from Shein. It's just for 200 rupees. Like for 200 rupees I got 3 beauty blender. तो और ये दो and this is the third one. इसे मैंने wet किया है so yeah. Okay, so for the foundation I'm going to mix this both foundations because ये मेरी skin से थोड़ा dark है और ये मेरी skin से थोड़ा light है, so I'm gonna mix this both. I'm gonna mix my face serum because this is like super matte and my skin is like dry to combinations, so yeah, this foundation is like full coverage and I'm in the shade 128 warm nude. और जो दूसरा foundation है ये है Fit Me Matte Plus Poreless and I'm in the shade warm nude again, but still ये वो जो पहला वाला था वो डार्क है और ये लाइट है, बट नेम दोनों का सेम दिया वाला है, पता नहीं क्यों। गोइंग टू मिक्स दिस और इसमें मैं थोड़ा सीरम भी ऐड करने वाली हूँ एज आई टोल्ड. दिस इज़ अ सीरम. दिस इज़ एवॉन का मिरेकल ग्लो सीरम. इसका बस एक ही ड्रॉप ऐड करने वाली हूँ इसमें फाउंडेशन में. आई एम गोना मिक्स दिस अगेन और इससे थोड़ा ड्यूई लुक भी आएगा, सो यू नो दैट विल लुक रियली गुड. and I'm gonna use my beauty गिरी के नीचे. Okay, so मैंने ले लिया. I'm gonna use my beauty blender for the first time. So yeah, let's go. Can you see the coverage is like amazing. Keep pushing you away while I want you to stay. I'm amazing, cold as ice, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what? और जब ये बचा कुचा होगा I'm gonna drag it on my neck. यहाँ पर थोड़ा बचा वाला है फाउंडेशन, so I'm gonna dab it on my pimple. Okay, my base looks really flawless. I really love the प्राइमर सही था. and if you're wondering कि मेरे ये कान में 3 ईयरिंग है और ये कान में सिर्फ 2 बिकॉज ये जो ऊपर वाला है ये मेरा हील हुआ नहीं है. I didn't put any earring over there, so yeah. So for the highlighting I'm going to use my favorite again in its का total control draw. I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen. Okay, so इसका नाम है Buff, if you wanna know. It's like amazing. I need my king. You better not to sin. I think I'm gonna blend it. so. I think so. I think so. I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you, want you, want you. ये हो गया. Now I am going to cream contour और cream contour के लिए I am using this NY का cream contour and I'm in the shade Toast. I absolutely love this. मैंने ये कुछ दिनों पहले लिया था
and I love it. I love it, and this is like very 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 affordable. I just used it once and I really loved it. I'm gonna apply it. And even my double chin, because I gotta hide it. अब इसे blend कर लूँगी From the same sponge sorry from the same beauty blender. now I'm going to Bake this. वैसे ज़रूरत तो है नहीं, but still for baking I'm going to use white paper powder. So yeah, बहुत हल्का सा बेक करने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं. हमने हाईलाइट किया था. You want that to set, so बहुत हल्का. थोड़ा यहाँ पर ताकि थोड़ा चीज़ भी लगे. Can you see it made like a huge difference. I'm not going to bake, just blend. ठीक है, moving on. With the eye makeup I'm going to keep it like really simple. So उसके लिए I'm going to first apply काजल. So ये है Blue Heaven का soft काजल eyeliner and I'm going to apply that on my upper and lower eyes. So yeah. Because हमें ये smudge करना है. I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, and okay, I've been running circles I'm going to take a blending brush और मैं इसे smudge करने वाली हूँ. all the time, but I want you. Okay, so I'm gonna do the same. Same with this eye too. This is from Hilary Rhoda. So मैं लगाने वाली हूँ इसे अपने inner corner में. कैमरा के ऊपर उतना पिक नहीं कर रहा है बट इन रियल लाइफ इट लुक्स रियली अमेजिंग. इसे मैं और इंटेंस करने वाली हूँ यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का आई शैडो. इट्स इन द शेड टोस्टी एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. ये कलर बहुत यानी बहुत सही है. For the highlighter, I'm going to use this Maybelline ka Master Chrome. This is also like my favorite. Apply it on the highest points. I can't breathe without your love. I'll apply false eyelashes off camera and I'll be right back. I've used Packa Mink eyelashes in number M22 और it's currently drying. So yeah, वो lashes पे लगाने वाली हूँ mascara. This is a Maybelline Hyper Curl Volume Express mascara. So I'm gonna quickly apply it on my lower lashes. Now for the lips I'm going to use this Lakme Absolute का लिप बाम. इसका नाम है विक्टोरियन रोज.
मेकअप सेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस LA कलर्स का सेटिंग स्प्रे. आई लव दिस. लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली setting spray, you should definitely go for this because this is like amazing. Anyways, okay, let's do it. बिंदी लगाती हूँ. वेट. I know these bangles are not going with the look, but मेरे पास bangles थे ही नहीं and I wanted to wear bangles, so yeah. I'll do my hair nicely And I'll be right back. That's it for this video. I really hope that you enjoyed watching this video. If you did, please make sure कि इस वीडियो को लाइक कर दे. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही करना. It would literally mean a lot to me. So I'll see you in my another video. Till then, bye bye. Take care.